Fark Parta mein today we will be talking to Sara Ahmed, who is a member of Provincial Assembly, Punjab and Chairperson, Child Protection and Welfare Bureau, Government of Punjab. She has actually been serving for 5 years and implementing significant child protection reforms in Punjab, और उनको Presidential Medal मिला है of Excellence in 2024 for her work in child protection as well. अभी recently भी वो honor हुई हैं in Global Collaborative Award in Rome 2022 for efforts against child abuse, और वो पाकिस्तान को represent करती हैं United Nations में since 2023 on child sexual abuse as well. और उनको तमगा इम्तियाज़ पाकिस्तान भी मिला है और अवार्ड की गई हैं पाकिस्तान की इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड इन 2024 बाय द यूएस एम्बेसडर. और आज जिस तरह मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बता रही थी, हम बात करेंगे अबाउट पंजाब्स मोस्ट प्रेसिंग एंड हिडन क्राइसिस व्हिच इज़ चाइल्ड अब्यूज़. अस्सलाम वालेकुम सारा, हाउ आर यू डूइंग? Walaikum Assalam. Thank you so much. I'm good and thank you for having me on your show. Absolutely. And today we'll be talking to you about a very crucial issue. और हम आपसे पहले पूछना चाहेंगे कि मेन वर्क चाइल्ड प्रोटेक्शन का क्या है बाय दिस वेलफेयर ब्यूरो? जी, so Child Protection Welfare Bureau is the only department, not just in Punjab but in the entire country, which has a legal mandate to rescue children. तो हम rescue करते हैं different categories जो बच्चे होते हैं who are vulnerable, including child beggars, missing children, abandoned children, child abuse victims, torture victims. So all these categories, also newly born abandoned babies, जिनकी हम adoptions करवाते हैं. So we're the only department who has a mandate to rescue, and हम street से rescue करते हैं बच्चों को. So in 1 year we rescue more than 10,000 children who are subjected to violence and beggary and all of this. So in 1 year we have 10,000 reported cases, is what you're saying? Yes, more than 10,000, including beggary, child abuse, child torture, and we are present in 14 districts of Punjab right now. All right, okay. So Sara, considering कि हम लोग इन 10,000 को बचा रहे हैं, क्या हमने कोई ऐसे actions भी लिए हैं कि ये issues occur ही ना हो? बिल्कुल, देखिए बड़ा ज़रूरी है. नॉर्मली क्या होता है, हम रिएक्ट करते हैं जब कोई हादसा हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है, लेकिन हमें ज़रूरत इस बात की कि हम प्रोएक्टिव होकर प्रिवेंशन की तरफ काम करें. तो हम एक बहुत बड़ी कैंपेन पे काम कर रहे हैं पिछले 6 सालों से, जब से मैं हूँ, और अभी भी एक और यूनिसेफ से लॉन्च कर रहे हैं, जिसका टारगेट होगा पुलिस, जुडिशरी, बच्चे, माँ बाप, टीचर्स. बिकॉज मैंने खुद विटनेस किए हैं ये इतने सारे केसेस जहाँ पे हमें मसाइल का सामना होता है, एंड वी नीड टू सेंसिटाइज ऑल दीज डिपार्टमेंट्स जो मैंने आपसे मेंशन किए, एंड इंक्लूडिंग बच्चों को डिफरेंस बताना बिटवीन गुड टच एंड बैड टच, उसकी अवेयरनेस कर रहे हैं. टीचर्स तक ये अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं और पेरेंट्स तक, ताकि वो अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करें, सो दैट दे कैन शेयर देयर प्रॉब्लम्स विद देयर पेरेंट्स एंड दे कैन रिपोर्ट सच केसेस. एब्सोल्युटली. क्या आपको लगता है कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स कोई केस आके रिपोर्ट कर सकते हैं चाइल्ड अब्यूज़ का, और क्या प्रोसेस है? इज़ इट ईजी? इज़ इट समथिंग दैट इज़ easily looked after and followed up on? जी, absolutely. So we have a helpline called 1121, and this helpline is not just used in Punjab, it's the same helpline for Sindh, KP and other, all the other areas of Pakistan. So anybody can call us on this helpline. 1121. Yeah. Yes, 1121. 1121. It's called the child helpline. And हमें इसी पे ये सारे cases report होते हैं जो मैंने आपको 10,000 की figure दी. Yes. So immediately Child Protection Bureau is going to get to the location where the child is being harmed, and we'll rescue the child who's in danger or who's vulnerable. So this is the way how to report it. Also, I would like to mention that I've represented Pakistan on global forums, as you mentioned. So Pakistan ne, in 2024, we've even made a pledge in the first ever global interministerial conference on child protection that we will work on positive parenting and expand child protection services all across Pakistan. So it's a pledge we've made to international community as well. Amazing, amazing. And हम लोग basically are we looking at supporting these children who are rescued? क्या हम उनको बाद में emotionally और educationally support कर रहे हैं so they can be back on their feet? Ji, absolutely. That's a very important point that you've mentioned. And Child Protection Bureau has trained psychologists in all these districts where we have centers. So we provide psychosocial counseling, right, to bring them back to life. Also, we provide education. So this is the only model where there's a school, where there's a child protection court. We have our own judge who sits inside the bureau. Okay. Taki there's no delay in taking custody of the child. Absolutely. And also, we are empowering these children. So this was not being done before, but I would like to mention that I started this initiative of
empowering and teaching them vocational skills, due to which now, alhamdulillah, our kids who were on streets are now working in multinational companies. So that's, I think, an achievement, and I would encourage people to report cases to the Child Protection Bureau so that we can take care of these children. Yes. Okay, great. So Sara, one more question for you is कि जो बच्चे बेसिकली स्ट्रीट्स पर हैं और जो ऑर्फन्स हैं उनके लिए बेसिकली कोई ख़ास प्रोग्राम है? हाउ आर दे बीइंग मेड अवेयर ऑफ गुड पेरेंटिंग एंड उनकी प्रिकॉशंस, और उनको हम क्या कर रहे हैं? कोई ख़ास प्रोग्राम है इन बच्चों के लिए? जी देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो सिटीजन्स हैं जो गुजारे होते हैं, ताकि वो जो अगर बच्चे को देखें भीख मांगते हुए तो फिर वो उसको out of sympathy भीख ना दें. Don't give them any money. It's actually a professional network. There are gangs behind it, so they need to report such cases. They need to bring the child to the bureau or to help him with his education, but don't give him money. This is one message for the citizens. Another thing, we need to be aware of what is happening in our surroundings. So if we see any child in danger in our neighborhood, जिसको किसी ने मुलाजमत पे रखा है, कोई उसके ऊपर abuse करा, तो immediately helpline पे call करें. तीसरी चीज, what we are doing to help these orphans and to bring awareness is that we rescue such orphans and children in danger or vulnerable, and then we work on their counseling, on their education. We provide them food, shelter. Everything is being done by the government of Punjab, free of cost for the child, till the child attains the age of 18, and then we exit them from the bureau after providing them a job, so that they can stand on their feet. And awareness हम बच्चों को भी वही देते हैं जो मैं आपको बता रही थी कि good touch, bad touch में फ़र्क सिखाना. Also teach them that they should not trust even their own blood relatives. You can't trust anybody these days. So don't let them go outside the house with anyone, क्योंकि छोटे एरियाज में यही होता है कि बच्चे को चाचा के साथ भेज दिया, किसी के साथ भेज दिया, उसके साथ वो सेक्सुअल अब्यूज भी हो रहा होता है काफी. Yes, unfortunately that is true. और गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है इस ब्यूरो को अपने गोल्स अचीव करने के लिए? जी, absolutely. So the Child Protection Welfare Bureau is funded by the Punjab government, and आप समझे 90% is funded by the government, 10% we do with the help of private philanthropists. Yes. और इस तरह ये bureau चले. So whatever we need, if we have a shortage of staff or anything related to children, we contact the government and then they facilitate us. So the Chief Minister is very hands-on. Yeah. She's very concerned about this cause, so we have her full support. Also, the Honorable Speaker Punjab Assembly Malik Ahmed Khan has formed the first ever caucus on child rights in the Punjab Assembly. It's the first time that a caucus has been formed to take all parliamentarians on board regarding all legislation regarding child rights. And we're also introducing a child protection bill, which will be the first of its kind in the Punjab Assembly. Okay, that's amazing. And when are we expecting this bill, and will it feature all of these details in it? That's true, yes it will. Yes. And I plan to move it inshallah within a month. Inshallah. Okay, great. And so what is your message to Pakistan कि हम पाकिस्तान में क्या हम किस तरीके से ये सिखा सकते हैं कि हम बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ करें, उनको मोहब्बत दें, उनको इज़्ज़त दें? How are we protecting and respecting every child of Pakistan? What is the message you can give? Right. देखिए, बिल्कुल, I go across very unfortunate cases जब माँ बाप अपने बच्चों को मार देते हैं. They kill their own children and employment पे रखवाते हैं, जहाँ उनकी डेथ हो जाती है. वो frustration लोग निकाल रहे होते हैं और उनकी unfortunately they die. Child. So basically, the message I would like to give is that these children are our future assets, and हमारी जिम्मेदारी है. देखें, ये बच्चे ये नहीं है कि हमने पैदा करके कहीं फेंक दिए. ये अगर हम पैदा करते हैं, हमारी जिम्मेदारी है. इनको प्यार, मोहब्बत और कॉन्फिडेंस दें, ताकि वो एक अच्छे शहरी बन सकें, ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर सकें. अगर कोई उनको हाथ लगा रहा है बुरी तरीके से, या कोई उनको किडनैप करने की कोशिश करता है, या उनको कोई गलत बता रहे हैं, दे नीड टू बी एबल टू एक ऐसा एनवायरनमेंट दें बच्चों को कि वो रिपोर्ट कर सकें, आपको बता सकें. और ऑनर एंड शेम के लिए वाकयात मत छुपाएं. आप पुलिस में FIR कराने के लिए भी ना आप हेजिटेट करें, वो भी कराएं, हमें रिपोर्ट करें केसेस का, ताकि ये जुर्म हम खत्म कर सकें. ये बहुत बड़ा सोशल इशू बन गया. In fact, I really think we should be marketing this helpline a lot as well, because I hadn't heard of it, and I really think कि ये सिंध, बलोचिस्तान, Punjab, 1121, right? Yes, 1121 is the helpline. All right, great. It's a toll-free number, and it's a 24-hour helpline. 24-hour helpline.